So, welcome to mobile computing. This is unit 1 of mobile computing, introduction to mobile computing. We'll be looking at introducing introduction to mobile computing applications, examples, mobile computing, the architecture itself, and mobile devices. So, let's get started. Unit 1. What is mobile computing? Mobile computing is a technology Mobile computing is a technology that allows transmission of data, either voice or video, from a computer or any other wirelessly enabled device to some other device without having the need to be connected to a device via physical link. Too many times device use. So basically, what it is trying to say is, mobile computing is a technology that allows transmission of data and voice, data in the form of voice and video, from one computer to any other wirelessly enabled device. एक कंप्यूटर से कोई दूसरे कंप्यूटर जिसमें वायरलेस प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो without having the need to be connected to a device via physical link. So this is redundant only. When you say wirelessly enabled, matlab without it having to be connected to a physical link, right? It refers to the interplay of mobile computing devices. It refers to the interplay of the mobile computing devices such as smartphones in a wireless and mobile environment. Smartphones, to be honest, are always in a wireless and mobile environment. They could barely, only I guess on Android phones, some Android phones can be supported via, getting internet via cable into it. But smartphones are always in a wireless mobile environment. This transmission involves the use of hardware, software, and communication technologies to enable users to access and interact with information and applications while on the move. So, mobile computing refers to the interplay of mobile computing devices such as smartphones in wireless and mobile environment, which allows the transmission. The transmission involves hardware, software, and communication technologies. So, the interplay between hardware, software, and communication technologies on mobile computing devices, which allows the user to interact with information and applications while on the move. That is what mobile computing is. सीधे शब्द में स्मार्टफोन में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो सब जब वायरलेस एनवायरनमेंट में यूज़ होता है and फिर when you get data and you can interact with that data over applications and internet, that is what is mobile computing. Yes or no? Or is it there for the difference between various generations of mobile computing is primarily on the basis of nature of technology, nature and technology of the system, data speed, data capacity, data frequency and latency itself. देख लेते ना. 1G, the first mobile network introduced in 1980 and continued till 1990. 10 साल चला. Analog था. Primary focus on voice communication using a technology called advanced mobile phone system. ठीक है. Devices were large and bulky with poor quality of battery life. All data services were extremely limited, only one country that you can call over. Moreover, the speed also was 2.4 kbps. 2.4 kbps is too less. Our base is right now at 345 kbps. Download is at 30. So, understand. The generation had poor handoff reliability. Handoff मतलब एक टावर दूसरा टावर तू गाड़ी में, ठीक है, तू गाड़ी में, तू एक टावर से दूसरे टावर जा रहा है से इधर, तो राइट नाउ यू कनेक्टेड टू दिस टावर, बट बाय द टाइम यू रीच हियर you have to get handoff from this tower to this tower, so then this tower connects to you. But this generation had poor handoff reliability. Here it says handoff is the process of transferring an ongoing call or data connectivity from one base station to another base station. Thus it had limited capacity. Okay, clear? 2G. 2G networks such as CDMA and GSM. GSM though I think we all have used at some point in our life. CDMA and GSM brought digital communications of voice communication and also brought new features like SMS.
Short message service. Using the SMS feature, one can send text and images from one device to another but at a low speed. CDMA आया, क्या आया? CDMA और आया अपने पास GSM. CDMA ऐसे लिख तो सही नहीं रहा. This also included features like internal roaming conference calls. Internal roaming matlab if you're in your own state, then you do not pay roaming charges. Conference call is combining, like, normal calls are peer to peer. You could add someone else to the call also, is what conference calls are. Holding calls. Wow. So 2G had a lot of more features than 1G. Internal roaming conference calls, holding calls, and everything. 2G was more supreme. 2G used both circuit and packet switching to provide data rates of 144 kbps. Data rates of 144 kbps. However, the introduction of two standards like General Packet Radio Service (GPRS) and enhanced data rates of GSM Edge, the speed of internet edge is that E that we see 50 to 1 Mbps respectively. With 2.5G hidden है, 3G hidden है, 4G hidden, तो डेटा क्यों नहीं अंदर इसका? ठीक है, anyway, नहीं है तो नहीं करेंगे और क्या. Wrong attitude होती है. Application and examples of mobile computing. Vehicles. Vehicles to in nature only are mobile in nature. एक जगह थोड़ी रुकते हो. So anything that is coming to a vehicle in the form of information is mobile computing के through. Transmission of news, road conditions, weather, music, DAB, personal communication, all using GSM. GSM was also in 2G. Positioning via GPS, local ad hoc network and vehicles close by to prevent accidents, guidance system redundancy. Local ad hoc network मतलब ये तेरा गाड़ी, ये रास्ते पे दूसरा गाड़ी. These two cars can communicate with each other using a local ad hoc network. Network close by to prevent accidents, guidance systems and redundancy. Guidance system मतलब GPS तो पता ही है. भाई माउस से टाइप कर ड्रॉ करना है थोड़ा. GPS. Let's clean it up. ठीक है. Road condition, weather, music, GPS, local ad hoc, guidance systems, redundancy. Vehicle data. Example from buses, high-speed trains can be transmitted in advance for maintenance. अभी बस है या ट्रेन है, अभी ट्रेन चल रहा है, ट्रेन का आगे स्टेशन आने वाला है, वो पहले से ही स्टेशन वाले को अलर्ट कर सकता है कि ओह भाई मैं आ रहा हूँ. तो how will it do it? It has to have some form of mobile computing to send data from point A to point B. बराबर. Emergencies. Early transmission of patient. अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, गॉड फॉरगॉड, बट है, तो अभी तेरा एम्बुलेंस अगर पहले ही हॉस्पिटल को तेरे बारे में भेज दे कि इसका हार्ट का ये कंडीशन है, हार्ट ये मेडिकल सीन ये है, तो द हॉस्पिटल कैन स्टे प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट डायग्नोसिस. लाइक द फर्स्ट डायग्नोसिस इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड टू द हॉस्पिटल पहले ही, तो हॉस्पिटल कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इमरजेंसीज. Replacement of fixed infrastructure in case of earthquakes, hurricanes, fire, crisis, war. तो जो अगर earthquake हुआ तो your fixed infrastructure is already destroyed, but then you could use mobile computing to send data from one point to another. Business people need it at this point, so everyone is business people. Then like direct access to customer files from stored in central location, consistent databases for all agents, mobile offices. To traveling business people. Replacement of fixed networks. Networks, remote sensors, example weather, earth activities. Flexibility of trade shows, lands and historic buildings. मतलब अभी तेरा एक बिल्डिंग है, उसमें पहले से तूने केबल्स ले करके रखे बट पुराने हो गए, अभी क्या करें? तो you could replace all of this by just adding mobile computing devices. ठीक है. Flexibility of trade shows.
अभी कॉन्सर्ट सेटअप कर रहे हो, थोड़ी ना यू विल हैव fucking internet cables coming into your concert. You could just have a mobile computing server to transmit data everywhere. That makes more sense. Mobile entertainment example, streaming, Netflix, Spotify, mobile games, application, video, music, mobile, ये तो अपन करते हैं. Mobile payment will use mobile computing, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Cashless transactions, mobile computing, mobile banking, digital wallets, wearable device हो गया, emergency and public. मतलब शॉर्ट नहीं है कि तुझे एग्जाम्पल नहीं आएगा कोई दिमाग में मोबाइल कंप्यूटिंग का. एनीथिंग दैट इज फकिंग वायरलेस डज मोबाइल कंप्यूटिंग. ठीक है. मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. तो मोबाइल कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में वी हैव द यूजर इंटरफेस लेयर. दिस इज टीयर 1 प्रेजेंटेशन टीयर. दिस प्रॉक्सीज एप्लीकेशन मिडलवेयर वाला लेयर, प्रोसेस मैनेजमेंट मिडलवेयर लेयर, बिजनेस लॉजिक वाला लेयर, database management middleware, data storage layer. ठीक. All of these are technically tier 1 is presentation layer. To understand presentation tier, एक second. Hello. Hello. हाँ. ऑफिस में हूँ. आजा, मैं पढ़ रहा हूँ. आजा आराम से, मेरे को सीन नहीं, बस बोल रहा हूँ. ठीक है. यूज़र इंटरफेस टीयर 1 इज प्रेजेंटेशन टीयर. मतलब तेरा जो मोबाइल ऐप हो गया उस पर जो डेटा आ रहा है वो सब प्रेजेंटेशन टीयर में आता है. ठीक है. अभी एक्सेस नेटवर्क, एक्सेस मतलब तेरे प्रॉक्सीज, अडाप्टेशन, मिडलवेयर. बेसिकली तेरा मोबाइल ऐप है, तेरा मोबाइल फ़ोन है, उसको डेटा लाने के लिए उसको किधर तो एक्सेस करना पड़ेगा ना, इधर वाया प्रॉक्सीज या इंटरनेट या कैसे. तो दैट ऑल इज़ हैंडल्ड बाय द एक्सेस लेयर, एक्सेस नेटवर्क लेयर. ठीक है. प्रॉक्सीज, अडाप्टेशन, मिडलवेयर एक्सेट्रा. अभी वो नेटवर्क करके डेटा जो ला रहा है वो कहाँ क्या से ला रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है. तो वो सारा डेटा आ रहा है तेरा एप्लीकेशन टीयर से. एप्लीकेशन टीयर बेसिकली क्या कर रहा है, उसमें एक प्रोसेस मैनेजमेंट मिडलवेयर है. जो तेरा जो भी रिक्वेस्ट आता है ना, वो पहले एक प्रोसेस मैनेजमेंट मिडलवेयर हैंडल करता है कि इसको ये चाहिए. फिर वो बिजनेस लॉजिक के थ्रू जाता है, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट मिडलवेयर के थ्रू जाता है. अभी तो डेटा टीयर में आ गया. ठीक है. और फिर वो फाइनली डेटाबेस को एक्सेस करता है एंड देन इट सेंड्स द डेटा बैक टू यू. विल सी एग्जैक्टली कैसे करता है ये. बट 3 टीयर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, डेटा. It is a 3-tier architecture. User interface presentation tier is tier 1. ठीक है. This is the front end layer and the 3-tier architecture. This is the front end layer and the 3-tier architecture. It is responsible for presenting information to users and handling user interactions while managing device handling. It is responsible for presenting information to users. बराबर, ये तो देखा. इसका काम है यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन दिखाना है वो डील करना. हैंडलिंग यूज़र इंटरेक्शंस while managing device handling. Some of its main functions include UI rendering the stuff that is coming in. मतलब देखो लाइक आया तो तेरा UI रेंडर तो करेगा ना हार्ट का और रेडोना और वो सब. Rendering and displaying UI elements, images, buttons and other interactive components. यूज़र इनपुट हैंडलिंग. अभी तूने मैसेज टाइप करके भेजा और एंटर दबाया तो तेरा इनपुट हैंडल किया. कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग यूज़र इनपुट एंड अदर इंटरेक्शन. टाइप किया मैसेज, एंटर दबाया, डेटा किधर तो भेजेगा ना फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट बी. तो वो भी एप्लीकेशन टीयर संभाल रहा है. ऑफ कैप्चरिंग एंड प्रोसेसिंग नॉट एंड सेंडिंग ऑफ कोर्स. डेटाबेस में स्टोर करना ये सब नहीं करता. तेरा क्लाइंट साइड इंटरेक्शन हुआ, क्लाइंट साइड वैलिडेशन टू एंश्योर यूज़र इनपुट्स आर करेक्ट. अभी तू फ़ोन नंबर में टेक्स्ट डालेगा तो वो सब तो तेरा क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन होगा ना. डजंट मेक सेंस टू सेंड योर. तूने फ़ोन नंबर मांगा, उसमें तूने ABCD लिख के भेजा, वो सारे लेयर्स के थ्रू एंड पे गया. डेटाबेस लेयर में आया वो कि डेटाबेस में तो हम लोग नंबर स्टोर करने वाले थे, तूने टेक्स्ट भेज दिया, सेंस नहीं बना रहा, वापस भेजो, एरर. ये तो बहुत स्लो प्रोसेस हो गया. तो इट इज़ बेटर टू चेक एट द क्लाइंट लेवल ओनली कि नंबर मांगा तो नंबर दे रहा है या नहीं.
समझा? एक्सेप्ट दिस तो कांट राइट, ये तो भूल ही जा, दिस इज नॉट अ वैलिड पॉइंट ओनली. The layer is responsible for requesting data from application tier 2. अभी तू रील स्क्रॉल कर रहा, रील चाहिए, तू स्वाइप डाउन स्वाइप अप जेस्चर किया, तो स्वाइप अप जेस्चर करने के बाद तेरे को जो कंटेंट आना चाहिए उसका रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा उसको एप्लीकेशन लेयर पे, विच इज टियर 2. And presenting the information to the end user, it abstracts the complexities of data processing and business logic, presenting a user friendly interface for interaction with the application. ठीक है? It is the layer of agent applications and systems, where the applications run on the client side and offer all the user interfaces. It is a layer of agent applications and systems. Agent level layer है, where applications run on client device and offer all the user interfaces. Application tier पे आ जाता है. Application tier क्या बोलता है? This is the second tier in the network architecture. Its primary functions involves processing, process management, business logic, and facilitating communication between the presentation tier and the data tier. मतलब क्या बोल रहा है ये? Its primary functions involve processing, process management, business logic, and facilitating communication between the presentation tier and data tier. बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, बिजनेस लॉजिक मेंटेन. अभी तेरा बिजनेस लॉजिक है, रील इंस्टाग्राम का बिजनेस लॉजिक है कि तू लाइक किया तो ट्वीट को रीट्वीट किया तो बाकी सब के ऊपर भी अपडेट होना चाहिए, तो वो बिजनेस लॉजिक हो गया. तो जो भी तेरा ऐप लेवल लॉजिक है ना कि ये किया तो ये होना चाहिए, वो किया तो वो होना चाहिए, यूट्यूब वीडियो पे डबल टैप किया तो 10 सेकेंड्स आगे जाना चाहिए, वो सब ये लेयर देखता है. एप्लीकेशन टियर, एप्लीकेशन तेरे मोबाइल ऐप में जो जो फीचर्स है ना उनका जो भी दिमाग है, लॉजिक है, वो सारा एप्लीकेशन टियर देखता है. एप्लीकेशन टियर का काम है, सपोज यूट्यूब वाला एग्जाम्पल है, तूने डबल टैप किया 10 सेकेंड आगे, तूने डबल टैप किया यूज़र ये वाले लेयर पे, टियर 1 वाले लेयर पे, उसका नाम है यूज़र इंटरफेस या प्रेजेंटेशन टियर. वहाँ पे तूने डबल टैप किया, उसने रिक्वेस्ट भेजा एप्लीकेशन टियर को, भाई सुन मेरे स्क्रीन पे कोई डबल टैप किया है, मतलब देख ले तू, एप्लीकेशन टियर विल अंडरस्टैंड. डबल टैप किया मतलब 10 सेकंड आगे का वीडियो देखना है, तो वो अभी टियर 3 पे जाएगा. टियर 3 किधर लिखा है, अच्छा नीचे, तो वो डेटा टियर पे जाएगा. डेटा वाले को बोलेगा वो मेरे को भाई 10 सेकंड आगे का जो वीडियो में कंटेंट है वो दे वापस, तो डेटा टियर वो रिटर्न करेगा और एप्लीकेशन टियर वही कंटेंट यूज़र लेवल को देगा. दैट इज़ हाउ इट फंक्शंस. ठीक है? Therefore this tier is presentation and database independent. Okay, so moving ahead. Therefore this tier is a presentation and database. This tier is presentation and database independent. इसको फर्क नहीं पड़ता presentation and database से. It has to only handle the logic and then communicate either way. It performs actions like define how data is processed and how the application behaves and makes decision, business logic, user authentication and authorization, security via session management, and transactions, queuing of process to support multiple users at a time. ठीक है? Most of these functions are implemented using a middleware software for interacting between OS and UI, using technologies like CGI, Java, JSP, .NET services, PHP. मिडलवेयर टाइप्स, तो मिडलवेयर के भी टाइप्स होते हैं. ठीक है? कितना है? ये पहला टाइप है मैसेज ओरिएंटेड MOM, ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड TPM, इज इट ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड, कम्युनिकेशन मिडलवेयर, और फिर ट्रांसकोडिंग मिडलवेयर. ठीक है? तो पहले MOM, मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर. ठीक है? This middleware facilitates communication and data exchange between different applications through messages.
This middleware facilitates a communication and data exchange between different applications through messages. MOM establishes a messaging infrastructure enabling communication across different machines and technologies. This middleware facilitates communication and data exchange between different applications through messages. MOM establishes a messaging infrastructure enabling communication across different machines and technologies, thereby allowing applications to communicate without the need for direct point-to-point connections or explicit knowledge of use of underlying platforms they are running on. MOM establishes a messaging infrastructure enabling communication across different machines and technologies. MOM establishes a messaging infrastructure, ठीक है, communication between different machines and technologies, thereby allowing applications to communicate without the need for direct point-to-point connections or explicit knowledge of the underlying platform they are running on. MOM system provides a message queue for sender to keep, placing messages on receiver to take messages when they are free, to decouple the sender and receiver components, allowing asynchronous communication. MOM works in publish subscribe manner. One or many objects subscribe to an event. When events occur, MOM will notify subscribers about them. Okay. MOM works in publish subscribe manner. One or many objects can subscribe to an event. When event occurs, MOM will notify subscribers about the event. This is suitable for event-driven applications. When an event occurs, publisher application will inform MOM middleware to publish event to subscribers. Transaction processing middleware. This middleware facilitates the management and coordination of transactions in a mobile computing environment. It is able to input data into the system at the point of information source and deliver the output of the system at the point. Transaction processing middleware matlab, this middleware facilitates the management and coordination of transactions in a mobile computing environment. Middleware facilitates the environment, management and coordination of transactions in a mobile computing environment. It is able to input data into the system at the point of information source and deliver the output of the system at the point of information sink. It is used in data management, network access, security system, delivery ordering process, airline reservation, customer service. Transaction processing middleware, process routine application server. तो ये client से बहुत सारे transaction processing middleware के साथ connected है. Processing routines और application server. तो क्या बोल रहा है ये कि the middleware facilitates the management and coordination of transactions in a mobile computing environment. It is able to input data into the system at the point of information source and deliver the output of the system at the point of information sink. मतलब जहाँ से information आ रहा है उससे information ले सकता है and it can deliver जहाँ पे information को भेजना है. मतलब तेरे मोबाइल एप्लीकेशन से information ले सकता है और सब प्रोसेस करके जहाँ पे स्टोर करना है वहाँ पे स्टोर भी कर सकता है, मतलब डेटाबेस में. कम्युनिकेशन मिडलवेयर, मतलब देख क्लाइंट से डेटा ले रहा है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मिडलवेयर हैंडल कर रहा है, प्रोसेसिंग रूटीन से एप्लीकेशन सर्वर पे स्टोर भी कर रहा है. तो ऐसे पॉइंट ए से एंड तक डेटा भेज सकता है. Communication middleware. This middleware is used to connect one application to another, like connecting one application to another through telnet. It is widely used in telecommunication network. Example: two devices, say a PC and tablet, communicate with each other irrespective of their size or platform through communication middleware. मतलब तेरा फ़ोन तेरे PC से communicate कर सकता है, तो हार्डवेयर अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, बाकी सब अलग है. ठीक है. Transcoding middleware. It is used to transcode one format of data to another format suit the need of the client.
So now we are at transcoding middleware. It is used to transcode one format of data to another format to suit the need of the client. अभी तेरे पास सर्वर है, सर्वर में फाइल MKV फॉर्मेट में है, ठीक है, बट तेरे को तेरे फ़ोन पे MP4 प्ले होगा. That's it. The transcoding middleware is where your file is technically getting converted from that one form to another and being sent to you. Example, if you want to access a website from a mobile phone supporting wireless access protocol, we need to transcode the HTML to WML, wireless markup language page. On accessing and sharing a map from your mobile to your computer, this map needs to be reduced in size as compared to that of a computer. Fair. The video transmission, some frames on a video clip need to be dropped for a low bandwidth network. So even bandwidth dropping is done by bandwidth adjustment is done by transcoding layer. Now we come to data tier. This tier, this layer is for database access and management. Used to store data required by application temporarily or permanently. This layer is for database access and management. Used to store data required by application temporarily or permanently. Data can be stored in the form of relational database, XML format for interoperability with other system and data sources. Data tier is very simple. With that, we conclude Unit 1.